Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpayle, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss about unique constraint. What is mean by unique constraint, guys? So it ensures that all values in a column are different. Unique constraint ensures करता है हमको कि जो भी values रहेगी column में वो सारी की सारी क्या रहेगी आपके different रहेगी मतलब unique रहेगी. It is described in a primary key by default. तो जो प्राइमरी की कॉलम होता है जिसमें हम लोग प्राइमरी की सेट करते हैं तो वो क्या करता है आपका यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसके रिकॉर्ड को. तो सेम जो है यूनिक की भी क्या करता है आपका कि यूनिकली आइडेंटिफाई आपको उसको आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को. Then there can be only one primary key and many unique key constraint per table. तो एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है लेकिन एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की हम लोग जो है सेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ द यूनिक की. तो आपको करना क्या है कि क्रिएट टेबल जब हम लोग टेबल क्रिएट करने वाले तो इसमें जो हम लोग कॉलम्स लेते हैं वहां पे आपको सिंपल क्या मेंशन करना है यूनिक. लाइक मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है ई नंबर इसका डेटा टाइप है 5 का इसका साइज दिया है नॉट नल एंड देन यूनिक. तो जैसे आपने यूनिक सेट किया तो अब क्या हो जाएगा कि ई नंबर में सारा का सारा डेटा क्या रहेगा आपका यूनिक रहेगा. आप जो ई नंबर में है डुप्लीकेट वैल्यू हम लोग नहीं डाल सकते. सो लेट डिस्कस प्रैक्टिकली हाउ वी कैन परफॉर्म दिस टेबल. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल फर्स्ट. Create table, that is I'm going to create a emp6 table. I'm going to create. Then my column name will be e number is my column name number and its size is 3. Then I'm setting here that is not null and unique. This is unique key column. Then I'm creating another column name that is ename employee number and employee number may having a character like 9 characters. Then I'm having salary column is there. Then number and then size may be like up to 2 decimal spaces. Okay. Then I'm creating another column that is suppose ECT I'm creating and ECT may be a character. So I'm mentioning 9 of his size. Okay. And just closing this parenthesis and okay, what is showing the name is already used by an existing object. Okay. It's showing that name is already existed means emp6 is already exists. So just create another different table. So I'm creating another table that is emp7 I'm going to create. Mention slash table created. You can check a description DSC emp7. So it will show that the emp column contain not null and unique values. Guys, if you want to add a unique key constraint to a column, so we can alter that table also. So how to alter that table? Use alter table command. Alter table. What is my table name? My table name is emp7 and emp7 add unique key. So unique key. Unique key I'm adding. Where I'm adding unique key here in the ECT. Suppose ECT I'm adding. Okay. So table alter. Now the unique key is applied for a ECT column. So you can alter that table also. You can check the description. Okay. You can apply a unique key on any column and you can alter anytime.